सेट्स रो दीटा एक्सरसाइज करथिलु गोटे आज आम कंटिन्यू करबा आ गोटे दिन एक्स्ट्रा क्लास करके होल टोटल जहाँ जहाँ पढ़ीचे रिवाइज कर तो तमें एबे बुझिया को चेष्टा कर किसी जिन फास्ट कथा मुझे तुमको कहबी दैट इज तो आम पढ़ी फाइनाइट सेट्स विषय मन अच्छी फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट इक्वल सेट राइट आम आज पढ़ा सबसेट विषय आ विषय सेट पढ़ते will be learning subsets तो बच्चा सर सबसेट कौन अरे तो बच्चा सर सबसेट कौन व्हाट इज सबसेट सबसेट प्रथम कथा है गोटे सेट भितर जो गोटे सेट थाए आम सबसेट को धर सेट अच्छी दबा भाया हम तो बहुत बड़ा बॉक्स अच्छे बॉक्स भीतर गोटे बॉक्स रही पार ना नहीं बॉक्स भीतर आउ गोटे बॉक्स अच्छे दैट इज सबसेट एमती कहीपर कि सबसेट a set where every set of A is also an element of माने सेट A रो आमे कहबा B रो से सबसेट जदि सबुतक एलिमेंट A रो कोथरे अछि B अछि ध्यान देखिबो केबे केबे एमिति भी हेई पारे कि इडा केस एठी एग्जिस्ट करिवो सब बेले केतेटा केस एग्जिस्ट करिवो एटा एग्जांपल देके बुझाइबी प्रथम कथा तो सबसेट रे कि ए हैला सपोज तो सपोज ए हैला 1 2 बी हैला 1 तो कौन 1 टा बी रे अछि 1 belongs to B 1 belongs to A 2 belongs to 2 belongs to एटी कौन all elements of कौन are also an element of कौन A कौन लिखा है if every element of B is also an element of every element of A is also an element of B ए बी रे कंफ्यूजन हो ना तो मूलटा लिख दीजिए हो कि जदि चेंज कर दवा हो ना तो हो जदि चेंज कर दवा कि लिखी दो कौन समस्ते ए एलिमेंट बी रे अच्छा ना नहीं वो all elements of A are also in B ठीक तो इठी हमें कहबा A is subset of B हम लिखिबा A एमदी एटा माने सबसेट रो सिंबल कहा सिंबल कहा केमती पढ़िबा इज ए सबसेट ऑफ बी कौन पढ़िबा ए इज ए सबसेट ऑफ रहला हां तो सिंबॉलिकली वी राइट A is a subset of B whenever A belongs to A then A belongs to जदि A टा A रे अछि तापरे A टा कोथरे अछि B रे अछि तो सबसेट क्लियर हैला हैला बुझ पालानी पाला ना बुझ पाला तो आयुष्मान क्लियर हैला
हाँ बड़ा हो गला मत शो करनी वेडिंग रे बोधे शो है आसीनी अंधार हो जाए चेक कर और ठीक अच्छे किसी असुविधा छाड़ ये क्लीयर है कॉन्सेप्ट आमर आम क्लीयर है आगू जा चल आम आगू जा तो व्हाट विल वी डू एटा लिखा कौन ना इन अदर वर्ड्स A is a subset of B whenever A belongs to A and A belongs to आम कन्वीनियंटली इम्प्लाइज लिखुचु ताने सिंबलिकली एमती लिखा हम A belongs to A this implies if कौन A belongs to B if एटा A is a subset of A implies आ गोटे एग्जांपल ना मत एग्जांपल 2 कहबी धर मुझे कहली ए है 1 2 4 5 बी है 1 2 3 4 7 कथा कह 1 belongs to 1 belongs to A belongs to 3 belongs to A 3 belongs to 4 belongs to A 4 belongs to 5 belongs to A 5 belongs to तुम कह सर ये तो इक्वाल सेट हो सब तक एलिमेंट एथरे भी अच्छी तो इक्वाल सेट हो सबसेट केमती हम इक्वाल सेट भी सबसेट हम बुझेगा किंतु किंतु बुझे इक्वाल हर गोटे कंडीशन अच्छे A is a subset of B से भाया देख 1 belongs to B 1 belongs to 2 belongs to B 2 belongs to 3 belongs to B 3 belongs to 4 belongs to B 4 belongs to 5 belongs to B 5 belongs to B is also a subset of कौन A is a subset of B and B is a subset of जो यही सिचुएशन आसो आम कह A is equal to A is equal to तो A equal to B रो कंडीशन कौन A सबसेट B B सबसेट चल नहीं तो आम से मन रख सब एमती लिखु बोलिक आम कौन लिखु तुम लिख एमती लिखल गोटे गार मीन्स इटा आइदर सबसेट हो पार ना कौन वेल सबसेट आर इक्वल टू चल एत डाउट रहा कौ क्लीयर है क्लीयर है हाँ यहाँ क्लीयर है कॉन्सेप्ट सबसेट रो ए रे जहाँ अच्छे बी रे से रहा सबसेट एवं सबसेट भी दी प्रकार कौन बिलोंग्स टू कौन हाँ देखुन सबुतक एलिमेंट ए बी रे थी all elements of A are also in an element of definition टा सब मन रखियो every element of A is also an element of कौन मन रहा ना नहीं हाँ 1 2 3 4 5 6 here also all elements of A are also element of B and here all elements of B are also element of so A is a subset of B and B is a subset of A एमती हुए दैट वी से इज इक्वल टू ये दुटा सेट है कौन
କ୍ଲିୟର ହେଲା? ହଉ ଏଇଟା ଲେଖ। ହଁ, ତାପରେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ। ହେଲା ହେଲା ଡନ୍। ଆୟୁଷ ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ବୁଝିପାରିଲୁନି? ଲେଖ। other words A is a subset of B whenever A belongs to B। ପାଟେ ଲେଖିବନି କନଭିନିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା। ନା ନା ତା ଉପରଟା ଲେଖିବନି, ଏ ପାର୍ଟଟା ଲେଖିବନି ଆଉ କନଭିନିଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇନି ତାପରେ ଲେଖିଲେନି ଏ ଉପର ପାର୍ଟଟା ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍ ଗଲା। ଲେଖିବନି ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍।
वन वन टू वन टू थ्री बी बाहर करो इतना नहीं बीटा ए रो सबसेट पहले कौन देखे देखियो तो केमती लिखो कहला वन टू बी सी ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू बी ହେଲା ଏ ହେଲା वन टू कौन कौन बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी is subset of y for all a well is कौन केतक एलिमेंट अच्छा धर ए है गोटे सिंबल एटा ना एक्स नहीं जाओ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स बिलोंग्स टू कौन ठीक ना केत एक्स गोटे वेरिएबल नहीं जाओ केतक अच्छा समस्ते ए रे भी बी रे भी अच्छा बीटा है ए रोटे आम सिम्बलिकाली लिखा देखा आगू देख माने भेन डायग्राम कौन कहबा वेन डायग्राम वेन डायग्राम कह देख देख लो पहला ए रे कौन अच्छी वन टू ता भितर अच्छी बी ए ई माने कौन ए कंटेन्स ए बी सी 1 2 3 4 1 2 3 कौन ये कौन बी इज ए सबसेट ऑफ कौन कहना से ए भितर अच्छी आ भितर अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना नहीं अरे बुझेला आयुष्मान है ना तो ए भितर बीटा अच्छी माने गोटे बॉक्स भितर आउ गोटे बॉक्स 1 2 3 एबीसी टा कहा सेट बी रा सेट तो बीटा है এইটা कहते प्रॉपर सबसेट कौन कहती प्रॉपर सबसेट जोटी ए भितर दुटा थी केबे केबे इक्वाल हो पारिबो केबे इक्वाल हबो आमे प्रॉपर सबसेट कहला
हाँ फिर 1 2 3 रहा सर क्लियर है तो वी रेट द above statement as A is a subset of B if an element of A implies A is also an element of A is not a subset of B we write A does not belongs to is not a subset of एमती गार तापर गोटे ହେଲା नहीं এইটা सबसेट ऑफ बी और ऑल ए तो कौन ये जो उल्टा भीटा लिखिले कि बुझ हम गोटे लिखिले ट्रायंगल बेटा पढ़ती फॉर ऑल कौन कह जाए फॉर ऑल आउ गोटे आम अच्छे एमती कहते देयर एक्जिस्ट यूज करिया एटा एटा देयर एक्जिस्ट माने आम एमती कहूनु लेट अस सपोज देयर एक्जिस्ट ए नंबर एक्स सच दैट कंडीशन आम पूर्व वर्ष भी करू नथिले लेट अस लेट एक्स इज ए रैशनल नंबर एमती नथिले लेट देयर एक्जिस्ट कहते देयर बुझीगला कॉन्सेप्ट हाँ डाउट नहीं तो we note that for A to be a subset of B all that is needed is that every element of A is in B. It is possible that every element of B also may or may not be A, right? तो मुझे तुमको बुझाऊली कौन बुझेली कि ना सबुतक एलिमेंट ए रा बी रा गला किंतु एबे सबुतक एलिमेंट कौन बी रा ए रा हेई पारे न भी हेई पारे ऐसा हेई पारे बा न भी हेई पारे कौन लिखा एवरी एलिमेंट ऑफ बी may or may not be an element of if it is so that every element of B is also element of A तामने कौन B is a subset of A तो कौन in this case A and B are the same set कौन हम कंडीशन लिखली A belongs to B B belongs to A ताहले A is equal to कौन where double implies सिंबल माने हला डबल इम्प्लाइज बा इफ एंड ओनली इफ कौन पढ़ती ये जो सिंबलटा दिखानी मझे यहाँ कहते डबल इम्प्लाइज कहुए इफ एंड ओनली इफ कौन लिखा हे ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ एंड आम कहवा एमती गोटे गार देले इक्वल गुडू गोटे गार कम पढ़ा हम इफ एंड ओनली इफ बा आई एफ एफ है गोटे है इफ जदि एमती दिगला कह इफ जदि दीटा को दिगला कह इफ एंड ओनली इफ माने एट माने कौन दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस आल्सो इम्प्लाइज दिस क्या माने हला A is a subset of B and B is a subset of A implies A is equal to B बा A is equal to B माने हला कौन A is a subset of B and B is a subset of A double implication एंड पढ़ी थी all कौन ना all कौन all real numbers all natural numbers are real numbers but all real numbers are not तो ये कौन नहीं था इम्प्लाइज दिया ही नहीं था तो सेम देखिए all sides of a equilateral triangle all sides एमती लिख कहि परिबो कि a angle a triangle having all sides 60 degree is equilateral triangle बा an equilateral triangle has all sides all angles बुझ
ମାନେ ଟୁ वे रे ट्रू हम फोटो से कौन ट्रू हम ताल कहते डबल इम्प्लिकेशन यदि गोटे वे रे ट्रू है जमीक कि कहली ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट नेचुरल से खाली गोटे इम्प्लिकेशन लगे कौन लगे यहाँ एथे डबल इम्प्लिकेशन लगुच माने ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज जदि ए बी इक्वाल है ताहले ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए जदि ए दीटा सबसेट होउची ताहले क्लियर है बुझी पालनी बोला कॉन्सेप्ट रे कौन डाउट अछि भी डाउट नहीं एवरी सेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ इटा कथा मन रखिबो ना कारण सबुतक एलिमेंट ए निजरे भी तो एलिमेंट ना हाँ कौन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए सबसेट सेट ये कौन सबसेट ऑफ इटसेल्फ अरे सबसेट रे कौन दीटा केस ना इक्वल टू बाय ये तो इक्वल टू हो तो भाई हो रहा है ना ए इज ए सबसेट ऑफ देखो मु इक्वल टू भी दे सेपेंगे इक्वल नोट टू कौन फाइ देखो फाइ माने एम्प्टी सेट तो फाइटा समझ सबसेट हो ना नहीं आधे जेहेतु किसी नहीं समझ भितर आसो ना नहीं मन रख एम्प्टी सेट गोटे कथा भाव खाली रूम अच्छी इमेजिन कर खाली बॉक्स अच्छी इमेजिन कर एप्पल थोड़ी ଏବେ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତାମାନେ କ'ଣ କିଛି ତ ନାହିଁ ଥାଏ ରାଇଟ୍ କହିଲୁ ଏ ହେଲା 1 ଏ ଆପେଲ୍ ଏବେ ଏଇଟା ବି यार देहरे जेहेतु किछि नाही ए समस्त सेट हबाकू empty sets the subset of all sets subset of कौन all empty set कौन जितक सेट अछंदी सेट a subset of चला बोलनी एमटी एमटी अमेरिका रू आसछु जानछु तो अमेरिका रे एमती एमती करिया माने है यस करिया माने है उल्टा बा क्लियर है ना एटा कौन डाउट रहा को क्लियर है देखियो एग्जांपल देखो एग्जांपल आ रहा कौन लिखा है देखो सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर ए सबसेट ऑफ आर ना नहीं तो सब तक एलिमेंट नंबर्स ना नहीं रैशनल नंबर कौन लिखा है क्यू ऑफ if A is a set of all divisors of 50 and B is a set of all prime divisors of 60 तामाने B रे कौन आसीबो 50 डिवाइजर कौन कौन फर्स्ट ऑफ ऑल A रे कौन कौन आसीबो A रे आसीबो 1 8 4 आसीबो 5 आसीबो
7 आसीबो एथरो प्राइम नंबर किए 2 1 भी हबो 1 7 तो कुह बी सबसेट ऑफ ए ना ये कौन क्लियर हला हां एबे ए कहिछि 1 2 3 1 3 5 ये कौन कहला बी कौन कहला ऑड नेचुरल नंबर लेस देन ठीक कौन ऑड नेचुरल 1 3 5 अरे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 5 ऑड माने कौन 1 3 5 ना तो कौन a is a subset of b is a subset of a so a equal to सेमती ए है कौन ए आई ओ यू बी है कौन ए बी सी एबे ए कौन सबसेट ऑफ बी कहीं बच he belongs to a he does not belongs to I belongs to a but I does not belong to है O belongs to A but O does not belong to B. Yes, U belongs to A but U does not belong to माने ए दिटा ही ए गोटे ए बिलोंग करछ आ के तो इज नॉट ए सबसेट ऑफ क्लियर हला क्लियर डाउट हां ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 yes then first of all the equal to the हे वेरिएबल ऑड नो तो कहां है ना 7 चलो अच्छे बढ़िया तमे कुह मते एबे कोन केमती लेट्स डू सम क्वेश्चन को एबे खुद मैंने फर्स्ट ऑफ आई ए सबसेट ऑफ बी ना नहीं हां किसी कथा अर्थ नहीं नेक्स्ट देखो ए बी कथा कह ए हला कोन 1 3 हला कोन 1 5 तो को 1 belongs to A 1 belongs to B belongs to A but 3 does not belongs to so A is not a subset of सबसेट हबो सबसेट हबो क्लियर नंबर 3 ए देछि 1 3 बी देछि 1 3 5 7 H belongs to 1 of A and 3 belongs to B तापर 3 belongs हाँ C तो A is a subset of C हबो ना नहीं this implies what A is a subset हाँ रह जा अरे पिले तुम माने चुप रहो रिकॉर्डिंग चलची चला है ना केरला निको केरला नंबर 4 कौन ये कौन 1 5 ये कौन छी सबसेट 1 3 5 7 1 वो जस्ट belongs to B 1 is belongs to C हां त प्रूफ करिवो ना हां तमे प्रूफ करिवो ना एटा बिलोंग करूची सबुतक एलिमेंट कहार बी रो कोथरे सी रे बिलोंग
एटा इक्वल टू होची कि इज सी ए सबसेट ऑफ बी इठी भी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए बुझी पाछ तो इठी भी कोन B is a subset of C but C is not a subset of Kerala huh but C is not a subset of so এটা কোউ কেস যদি একো কহନ୍ତି proper subsets but it is called जोटी A is a subset of C but C is not a subset of A then A is called the proper subset of understood concept ना बुझी पारलनी अरे बुझीला हाँ तो ताको कहନ୍ତି proper subsets बा supersets कौन ताको proper subsets बा superset केला मु कोन कहूची ना let's see this the definition कौन लिखछि देख let A and B be two sets धर A B दीटा set A is a subset of B and A is not equal to B हाँ कहबे B is not then A is a proper subset of B तमे कौन कहबा proper subset और B कहबा superset B कौन कहबा केला सेमती कि A हैला 1 2 3 और B हैला 1 2 3 4 तो ये proper subset concept clear next आउ गोटे concept कि यदि A रे गोटे एलिमेंट अछि एलिमेंट आमे जा कहू सिंगलटन सेट माने सेट बिलोंग्स टू सेट A हैला कौन डाउट रहला को क्वेश्चन दोचे ठीक है ए तीनटा क्वेश्चन दोचे करिक आसी फोन नंबरटा मु शिखेनी तुम फोन नंबर में पढ़ा पावर सेट पढ़ा नहीं ये जाएंगे होमवर्क दोचे करके आसब क्लियर